Good morning, students. Yesterday we started our fifth chapter, Yoga. Yoga word come from the huge word which means to join. It is concerned with the union of the individual soul. Yoga is the unification of Atma with Paramatma. So many meanings are there, like yoga is attending the pose, yoga is spiritual kamdhenu, the knowledge about Shiva and Shakti is yoga. According to Bhagavad Gita, skill is action or efficiency along with yoga. So many meanings are there. So after this, after this, we should know what is the importance of yoga in our life. Now, in the basic, we will talk. In the busy life, in our busy life, everyone is the busy person. Every person is busy in their life. Their life is full of problems. They are not happy. They are not having time. Everyone is in hurry. सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्दीबाजी है सबको, और एवरीबडी इज इन अ हरी. If people are rich or they are poor, the age of they are facing so many stress, tensions, anxiety. They are not, people are not having happy life. They are not having their productive life. They are physically tired. They are doing full day work, 12 hours working jobs are there, है ना. They are doing whole day work. They are physically tired, mentally tense too. So what people are doing, इन सबको हटाने के लिए क्या करते हैं? They are attending parties. They are, most of the time people are using phone. Some people are drinks for relief, for satisfaction, and for relaxation. To इन सबको करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, पार्टीज़ कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बट हमें अंदरूनी शांति नहीं मिलती इन चीज़ों से. जो रियल पीस चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पीस एंड रिलैक्सेशन, वी आर सफर विथ मोर टेंशंस, मोर स्ट्रेस. Purchased relaxation does not provide us with peace and satisfaction in life. है ना, ये सब ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है. For the long term solution is yoga. योगा करके हम लोग इन चीज़ों से ऊपर आ सकते हैं. Yoga can be significant for us. We can get rid of stress related problems by practicing daily yoga. Now I will tell you some points. Points will show you the importance. What is the importance in our life of yoga? Now, points are showing to you physically purity. Now, few points are there. They will show you the importance of yoga. Physically purity, cure and prevention from disease, reduce mental tension, healthy body, provide relaxation, helps maintain the correct posture of body. Yoga can be performed easily anywhere. Spiritual development, increase flexibility, reduce obesity, improve health, enhance moral and ethical values. Now, these are the basic importance we can feel in our daily life. Now,
Physical purity. First is physical purity. Now, internal organs are in our body. We can clean by various yogic kriyas. योगिक क्रियास के थ्रू हम लोग हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं. देयर आर मेन 3 सब्सटेंस इन आवर बॉडी, वात, पित्त और कफ. If there is proper balance of these substance in our body, we may remain healthy. अगर हम हमारे बॉडी पे इन 3 चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस कर लेते हैं, प्रॉपर यौगिक क्रियाओं के द्वारा अगर इन पे बैलेंस रखते हैं तो हमारे ऑर्गन्स क्लीन रहते हैं. अब हम इन्हें हाउ वी विल क्लीन दैम? बाय डूइंग जलनेति, कपालभाति, अनुलोम विलोम. सो मेनी क्रियाज आर देयर. Internal organs of our body in a clean state. For proper cleanness and purity of our internal organs, we should perform these yogic kriyas exercise daily in a regular life, in a regular routine. So our internal organs will be clean. Next is क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज़. योगा हमें कैसे बचाता है बीमारियों से. देर आर वेरियस डिसीज विच यूजली हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स us from many diseases but also cure them. Various yogic exercise increase the immunity power of an individual. If an individual performs yogic kriyas daily in a regular life, he control fall ill. अगर हम लोग हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में योगा करते हैं तो योगा हमें सिर्फ बचाता ही नहीं है, काफ़ी सारी बीमारियाँ इससे दूर भी हो जाती हैं. ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है. लाइक सो मैनी डिजीज आर देयर. लाइक हाई बीपी आजकल सबको है, शुगर, हाई फीवर, हार्ट अटैक, बैक पेन, अस्थमा से रिलेटेड बीमारियाँ, जितनी भी ये सारी स्ट्रेस, जितनी भी ये आजकल बीमारियाँ हैं, इन सब से हमें प्रिवेंट करता है. इट कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड बाय वेरियस योगिक क्रियास.